And on to the latest developments as far as the Uttarakhand disaster is concerned. About 203 people are missing after the glacier broke off in Chamoli district of Uttarakhand yesterday, triggering flash floods. 27 people have been rescued. 14 bodies have been recovered so far. Now, the catastrophe has left behind a trail of destruction. While the Rishiganga hydropower project near Joshimath has completely disappeared, another NTPC hydro project on the Ganga river has been partially damaged. 5 bridges have collapsed. 13 villages have been cut off by the surge of water. Construction work in the valley has also been damaged. राहत कार्य तो पूरी रात वहां पर चलता रहा। 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषिगंगा नदी पर ही है, ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया। इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो रिकवर हुई हैं और जो मिसिंग हैं कुल 203 की अभी तक खबर आई है। जो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, अगर उसके कारणों का कुछ पता चल जाए और उसका कारण ढूंढें तो फिर ताकि भविष्य में कुछ एहतियात बरता जा सके। Meanwhile, a day after the massive flash flood, mud and debris were seen on both banks of the Rishiganga and Ganga rivers. Times Network's Mohit Bhatt reports from the epicenter of yesterday's flood. On my right is Rishiganga. You can see it's completely black as of now due to the silt and the part of mountains and the part of Rishiganga dam that was completely devastated by this particular Rishiganga river. Now a part of Nanda Devi Glacier fell into this Rishiganga river and it completely created havoc. Now this is the place, this is the confluence of Rishiganga, and on my left side you see Ganga. Now this is the place where both of these rivers meet, and then the devastation happened because the water from Rishiganga, which was also containing the water from the glacier of Nanda Devi, met Ganga over here, and you can see there are still remains of devastation over here. You can see the trunk of trees, you can see debris all around. The river Rishiganga is nowhere to be seen. It's only silt, it's only debris, and that clearly shows what kind of devastation has happened yesterday. Now, this is the point. This is the epicenter where Rishiganga meets Ganga, and Ganga went ahead and it damaged the part of NTPC's thermal power plant, where still many workers are trapped inside the tunnel. Meanwhile, rescue operations are underway in full swing to rescue at least 30 people trapped at the NTPC plant tunnel since the glacier burst. Apart from the terrain and the low temperature, mud and debris in the tunnel are also posing to be a major challenge for the rescuers. Heavy excavators have been deployed at the spot as well to clear out the slush at the entrance of the tunnel. Rescue operations at the tunnel were halted last evening after water of the Mandakini River surged. This is the second such tunnel where people were trapped after the flood. Yesterday, ITBP successfully rescued 16 people from another tunnel. उसके बाहर लगभग 100, 125, 150 मीटर में मलबा भरा पड़ा है, जिस पर किसी मशीन चल नहीं सकती है। मैनुअल वहां पर सब काम हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी कोई मशीन हो जो दलदल में चल सके या फिर उस दलदल को सॉलिड किया जा सके, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसके लिए भी बात हुई है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कहीं है तो अगर उपलब्ध हो सकती है तो वो टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत होगी। We spoke to ITBP DIG Aparna Kumar, who gave us a lowdown on the efforts undertaken to rescue those who are trapped in deep tunnels since yesterday morning. Ma'am, where have we reached? How many of the people have been evacuated? How many dead bodies have been recovered? And how many are still feared to be trapped inside this tunnel? Yesterday there was a small tunnel from where 12 people were rescued. They are at 1st Battalion ITBP Joshimath and they are safe. Okay. And downstream there were 7 dead bodies which were recovered by the SDRF Uttarakhand. कनेक्टिविटी कटा है उसको हम लोग फिर से रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे और वहाँ पे राहत कार्य पहुँचाए जा रहे हैं। टोटल 2500 पॉपुलेशन है वहाँ और हमारे राहत कार्य जारी है वहाँ।
Meanwhile, Times Network exclusively spoke to the relatives of the missing workers at the NTPC plant who have been having sleepless nights since they heard about the glacier break. They allege if heavy machines were in place, rescue operations could have been expedited. I'm being joined by some of the family members of those who are still trapped in the debris, those who are still trapped inside the tunnel. We'll speak to them. They are here since last evening, since the time they got to know that this tragedy has taken place. Sir, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भंडारी। सुरेंद्र जी, आपके परिवार का कौन है अंदर जो अभी फंसा हुआ है, और फोर्सेस की ओर से आपको क्या जवाब दिया जा रहा है? मेरे खुद ही बच्चा है, छोटा वाला है। आपका बच्चा है? हाँ, बच्चा है, फिर भतीजा है, दो भतीजे हैं। हाँ। अरविंद है, रोहित है। हाँ। रोहित अकेला लड़का है। कल से कुछ पता नहीं है? कल से कोई पता ही नहीं है। फोन लग रहा है टनल के अंदर? कोई फोन नहीं लग रहा। कुछ नहीं लग रहा। तो दोनों यहाँ क्या काम करते थे? ये सप्लाई में काम करते हैं तीनों। सप्लाई में काम करते हैं। आपके परिवार का कोई फंसा है? सर, मेरा भाई फंसा है, छोटा भाई फंसा हुआ है। आपका भाई फंसा है? अच्छा, क्या काम करता था वो? सर, ये पानी के उसमें था, वो सप्लाई में। हाँ। और लेकिन कल से हम आए हुए हैं, लेकिन काम बता रहे हैं, अब बताएंगे किस समय बता रहे हैं। 100 मीटर हो गया, किस समय बता रहे हैं कि कुछ 30 से 35 लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। किस समय बता रहे हैं 50-60 लोग हैं। कोई अनुमान नहीं बता रहे हैं। कोई अनुमान नहीं बता रहे हैं। क्या नाम है आपके भाई? उसका नाम सर सतेश्वर प्रसाद पुरोहित है। मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित है। फोन लग रहा है? फोन नहीं लग रहा सर। दीपक टमटा सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर है। कल से कोई पता नहीं? कोई पता नहीं है सर। कल से हम इन्हें परेशान हो गए। शासन पर कल सीएम भी आए थे यहाँ पे। हाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। 10 बजे आपदा आ गई थी, 12-1 बजे आए सीएम यहाँ पे। हाँ। तो लेकिन जब सीएम आए तब यहाँ पे जनता जुड़ी। मतलब लोग तो थे यहाँ पे पहले सब, लेकिन ये मशीनें देखो ना, आप देखो सामने वो है। हाँ। आर्मी की मशीनें लगी हुई, एनटीपीसी प्रोजेक्ट है, एससीसी प्रोजेक्ट है। कोई मशीनें नहीं होंगी, कोई वो नहीं है कि मतलब टनल कितने। अच्छा, देरी का आप इल्जाम लगा रहे हैं? देरी है। आपको कब पता लगा कि लापता है और फोन नहीं लग रहा है? जैसे ये डैम बाढ़ आई, जब हमको पता चला हमारा भाई वहाँ पे है, तो हम सब एकत्र हो गए। हमने कहा भाई फोन लगाया, ये क्या वो क्या, लेकिन फोन तो लगा नहीं।